We are here today to check out some more cricket. But should we just call it like Cricket Tuesday or something like that? Cricket Tuesday. Cricket Tuesday. Cricket Tuesday. It was repeating itself. Can we just see that? It's so true, though. Okay, well, first of all, true. Mitch Johnson, Brett Lee, MS Dhoni, with all that boring stuff out of the way, this is a very important, momentous occasion. All right, welcome back to Boring Reviews. Nick here. Gabe, the Night Watchman. Oh, that's right. And even though this is Boring Reviews, it's the Night Watchman, baby. You know why? You know why, Nick? I'm in a great mood. You know why? Just go ahead and ask me why. Because it's the summer of Gabe. That's right. I asked a question and didn't even let you answer. That's right. WTC championship, you know what I'm saying, with New Zealand. I'm still claiming that. You can claim whatever you want. Our first 100 match that we watched, and of course, the Trent Rockets, you know what I'm saying? A little Alex Hale, the Hailstorm, whole that cousin. I'm feeling good about myself. That's just fewer wins than months in the summer. Doesn't it count? Get out of here. But we are here for another episode of Cricket Tuesday. Woo, that's right, my friend. That was pretty good. And we are back for another Breakfast with Champions, BWC. We have been enjoying these conversations. These 20, 22 minutes videos go by very, very quickly. And today I want to check out Rohit Sharma because it's been requested so much. But I noticed there's a Rohit Sharma and a Dhawan combination interview. And I'm sure we're going to miss some stuff from the solo Rohit Sharma. But I want to check this one out because you got two guys in there. We can learn twice as much information, maybe. I'm not sure if that math makes sense. But we're going to go ahead and check this out. Don't forget, please, to like and subscribe to the channel if you've not done so yet. How dare you? Like 90% of our viewers have not subscribed yet. Go ahead and hit that button. Let's just go crazy today. Ooh, I have a belated birthday. Go ahead, just smash that as a birthday gift for me. But I know you're a big Rohit fan, you know what I mean? And I like Rohit too. But I'm actually more interested in listening to Shikar, man. He is a funny cat, first and foremost, okay? And he just recently captained the Indian B team, right? Let's call it the B team because the A team was not there, and did a pretty good job, right? And he's just he's a fun character. I mean, he's got a celebration when he does the catches and whatnot. And correct me if I'm wrong, wasn't it when we were watching the Breakfast with Champions with Kohli, he was talking about how it was Shikar who he went back, was it back home, I think he went, or whatnot, for New Year's, because he had promised that he was going to, you know what I mean, like some rando fan, you know what I'm saying? Yeah. Yeah, and I'm like, bro, you're like an international superstar, you know what I mean? But you kind of like that he's a man of his words, and, you know, okay, I said I was going to be there, I'm going to be there. Everybody else is out having a blast, New Year's parties all over the place, and he's here with this, like, rando fan. I was like, oh, you got to love it. I think it was a little more just a random fan. I think it was like some kind of small corporation, but maybe. I'm not exactly sure. All I know is the Ultimate Warrior Macho Man are saying it's time to check this video out. So let's go ahead and do this. And we'll get this video started in 3, 2, 1. पहला ही ऐसा पहला एपिसोड है कि विद टू पीपल टुगेदर है ना पहले ही है ना विद टू पीपल टुगेदर हार्दिक के दूसरे उसमें एक के साथ एक फ्री है वो दोनों हैप्पी आवर से वो तो हैप्पी आवर से और ये अप्रूव किसने किया सोचो ये आइडिया बॉस ने रितिका ने दो सूर में दो नाइस टू swashbuckling men ना आज के पहले स्ट्राइक ले फिर चल स्ट्राइक ले आगे करो एक मिनट स्ट्राइक रोहित नहीं लेती ये 10 मिनट पहले पहुंच गया था ये स्ट्राइक आज भी पहले ली थी प्रीति मैं थोड़ा टॉयलेट कर Yeah, sounds like me. Oh, is he wearing a Boston Red Sox hat? What are you doing to me, Shikar? I love it. He is. Why? Zoravar, why don't you sit here instead of your dad? It's okay. I'm still a fan.
Since your dad is not here, You come and sit since your dad's not here. Yeah. you want a hovercraft? If you sit here and answer all the questions he asked. Just two. Yes, Red Sox. Four questions you Four answer. questions. Now your father is here. You Sit here, can't sit do here. it. Tell him he can't sit here. Tell him he can't sit here now. Tell your papa to wait. So easy going. So, Zorawar, how do you enjoy opening the batting with Rohit? You have to answer, otherwise you are not gonna get. Who's a better batsman, you or your dad? Oh, nice. Now you will get whatever you want. Are you looking forward to playing in the World Cup? No? You don't want to play? I'll play for you. What is your dad's shirt number? What does he wear on his shirt? If you don't answer this, Actually, we should ask Shikar if he remembers his number. Do you remember your number? What is it? 25. you should know. 25. Now you won't get it. You won't get a gift. And what is Rohit's number? What's your number? How can I tell you? You have to answer it. Ask Ritika, she'll tell you. Actually. बंदा इतना वाला है भाई. Oh yeah. Oh, nice, well done. Stole the show. Very good. You guys are like an extended family only, no? जब से जोरावर ने होश संभाला है. हाँ तब मुझे से याद वो है. रोहित की गोद में ही है. I feel कि हम दोनों को बड़े similar हैं. Like he enjoy staying with his family as well. Now he's taking care of his little baby girl, and of course his wife. And अब मैं कल ही जैसे साथ बैठे हुए थे तो मैं पूछ रहा था कि भाई तू उसको शॉवर देता है या चेंज करता है या नहीं. तो अब वो कल उसको घुमा रहा था. सारी चीजें मैंने शिकर habits. को करते हुए देखी है. तो मैं सीख रहा हूँ इससे. उस चीज में मैं 3 कदम नहीं, आगे नहीं, हूँ मैं. कुछ साल पहले ही था. ऐसा लग रहा था कि हम लोग एनसीए में खेल रहे हैं एक साथ. अभी दोनों बच्चे के बाप बन गए. Do you guys remember when you first met? मुझे याद है, इसको याद नहीं इसको नहीं होगा. याद होगा. इसको मेरे check करें. वहाँ चुचू के टाइम ना. क्या चूचू के टाइम? नहीं. यार जो एनसीए का कैंप हुआ था वहीं मिले थे ना पहली मिनट, बार. ये उससे उस वक्त तो इंडिया अंडर कौन है वो तो बता. वो नहीं बता सकते. मतलब कोई बुरी बात Nick, that's a dope Mumbai Indian hat. Yeah, it is. निकनेम है किसी Oh, का. I can get that. जिसको पता नहीं है कि उसका निकनेम चूचू है. शायद पता भी हो सकता है भाई, पता नहीं यार. अंडर 19 ये वर्ल्ड कप खेल के आया था शिखर. तो शिखर का बड़ा नाम था उस टाइम पे, क्योंकि अंडर 19 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द सीरीज होकर आया था वो बांग्लादेश में. और उसके बाद तू भी उस वक्त फिर 2 साल बाद तू खेला ना वर्ल्ड कप. हाँ, उसके 2 साल के बाद. पर जब हम मिले थे तब तक तू खेला नहीं था. बट नहीं तभी मैं 17 साल का था यार. 17 नहीं 16. तू 18 साल का था ना तभी. हाँ, तो ये वर्ल्ड कप खेल के आया था शिखर का. काफी नाम था. मैंने मैचेस भी देखे थे और एक तरीके का ऑरा भी था इसका उस टाइम पे. अभी भी हो रहा तो अभी भी है. हाँ अभी भी है. अभी भी तो अपना खुद का स्टाइल है. बट तभी तो It's still there. जानते नहीं थे ना एक दूसरे को. अभी तो मैं जानता हूँ उसको. Do you remember the first time you opened together? चैंपियंस ट्रॉफी में हाँ. इवन प्रैक्टिस मैच में नहीं करी थी ना तूने ओपनिंग. डायरेक्ट मैच हाँ. में. डायरेक्ट सीधा ही. हाँ. छोटा पंगा तो लेना ही क्या नहीं है. स्टोरी था यार वो. मैं इतना नर्वस था क्योंकि मैंने कभी ओपन नहीं किया था. ओपन किया था इंडिया में 1-2 बार, 1-2 मैचेस में किया था. बट चैंपियंस ट्रॉफी में इतना बड़ा टूर्नामेंट है. पता नहीं सडनली एमएस ने मुझे बोला कि तू ओपन कर यार फर्स्ट मैच. ठीक है चलो देखते. उसने बोल तो दिया और मैंने हाँ भी बोल दिया. फिर रूम में जाके मैं सोचता हूँ अरे मैंने क्या किया, ये ठीक किया कि नहीं किया मैंने. और टॉस हुआ मैं कह रहा हूँ ओपनिंग पार्टनर कौन है मेरा. मेरे को ऑपोजिशन कुछ पता नहीं था कि किसके साथ खेल रहे हैं. क्योंकि मुझे लगा था, मुझे एक आइडिया आ जाता है प्लेयर को कि प्लेयर मैच खेल रहा है या नहीं खेल रहा है. Yeah. साइकोलॉजिकली आपको पता चल जाता है. Feelings आ जाती है. फीलिंग. तो मैं प्रिपेयर कर रहा था कि मैं नहीं खेलने वाला हूँ तो मैं क्या करूँगा. पूरे दिन ट्रेनिंग करूँगा, ये करूँगा. तो मुझे ऑपोजिशन कौन था मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था उससे. मुझे पता भी नहीं था कि हम साउथ अफ्रीका के साथ खेल रहे. फिर रात को वो बॉम्ब गिरा कि भाई तो ओपन कर रहा है. तो नर्वसनेस था. मैंने उसको पूछा यार शिखर स्ट्राइक कौन लेता है, तू लेगा या मैं लूँ, मतलब क्या है. उसने बोला नहीं मैं नहीं लेता हूँ, वो तो लेता ही नहीं है उसका. मैं बोला अबे भाई मैं पहला मैच खेल रहा हूँ, मैं ओपनर भी नहीं हूँ, तू ले. तो इसने बोला नहीं मैं कभी लेता नहीं हूँ मैं. तो चल ठीक है क्या हुआ, जैसे आउट होऊंगा ना. चल ठीक है. गए हम लोग. Nice. हमने 100 का पार्टनरशिप बना दिया सीधा.
और हमने बनाए थे 330 या ऐसा कुछ बनाया था और जीत गए थे मैच। वो भी क्या Holy टूर्नामेंट cow. होता है, सारे प्रैक्टिस मैच से लेके 330. Whew. हाँ, एक भी मैच नहीं आ रहे यार, एक भी मैच नहीं आ रहे। इंडिया ने एक भी मैच नहीं हारा वो पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में। इवन प्रैक्टिस मैच दो खेले हम दोनों, हम ऑस्ट्रेलिया जीत के गए साथ और श्रीलंका के साथ। और सारे मैच Wow. जीत गए। That is cool. पर बीच में क्या बात करते हो तुम? वो शिकर ही बताएगा आपको। बीच में हम क्रिकेट की भी बातें करते हैं, बक भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। मुझे तो कभी कभी हंसने आता है क्योंकि मूड लाइट हो जाता है फिर मेरा। अभी इतना क्रिकेट खेले, इसको भाई साहब को पता है कि कौन बॉलर क्या बॉल डाल रहा है, ये वो फिर भी आगे पूछेगा अरे इसका ये आउटस्विंग डाल रहा है ना। अरे भाई डेल स्टेन है, आउटस्विंग ही डालेगा, थोड़ी इनस्विंग डालेगा। और जब भाग रहे हो तो इशारा, कॉल भी होता है, आंखों से इशारा भी हो जाता है, ऐसे किया और मैं It's gotta be hard to मतलब see वो when उतना you're नहीं in the होता game. मेरे में पता चल जाता है। वो इंस्टिंक्टली होता है और क्योंकि इसीलिए अगर कुछ आगे आंख में तो बट अब थोड़ा सा रिलेशनशिप में अब थोड़ा स्ट्रेस भी आ गया आजकल, क्योंकि डीआरएस का कॉल अब तो पार्टनर को लेना पड़ता है। it's a very tough call because नॉन स्ट्राइकर भी क्या अंपायर की पोजीशन में तो नहीं खड़ा है ना, क्योंकि अंपायर वहां पर भी खड़े रह के सही डिसीजन नहीं देते तो हम वहां से कहाँ क्या करेंगे। तो मैं इसको सिर्फ जाके ये पूछता हूँ कि बैट लगाए क्या, बता मुझे। क्योंकि बैट का मुझे नहीं समझ में आएगा वहां से। फिर ये बोलता है कि नहीं लगाए जो भी है उसके हिसाब से मैं फिर उसको ये बताता हूँ कि पिच हुआ है कि नहीं लाइन में, फिर हाइट वाइट, फिर मतलब 15 सेकंड में आप क्या क्या डिस्कस कर लोगे यार। फिर सही हो या गलत हो डिसीजन, पर फिर बैक करना चाहिए अपने प्लेयर को। हाँ, ये बड़ा मतलब जरूरी है, क्योंकि कोई ऑलवेज राइट, कोई जानबूझ के थोड़ी कर रहा है। ये एक लॉटरी जैसे ही है यार। हाँ, बट यू आल्सो एज अ कैप्टन कभी अभी बॉलर आके पूछे, बॉलर का मैं सुनता ही नहीं। एक्साइटमेंट में आने नहीं लेना Exactly. आउट। Don't listen to that. भाई तू कीपर क्या बोल रहा है, तू बता मुझे। इन्वेस्टमेंट है इसमें, तेरी नहीं सुनेगा। Exactly. अच्छा चलो, अच्छी बात तो होगी। अब बताओ व्हाट इज द मोस्ट अनोइंग हैबिट अबाउट ईच अदर? Wow, going for it. जब भी टॉस वॉस हो गया, अभी जब बैटिंग को बाहर जाना है तभी ये टॉयलेट चला That जाता sounds like me. है। यार शिखर चल यार, नीचे जाना है। मुझे कैसा है ना, 5 मिनट पहले रेडी हो जाना पसंद है मुझे। जब प्लेयर्स लोग अंदर जा रहे हैं ग्राउंड पे, फील्ड पे, इसको 5 मिनट पहले आती है Yeah, get it out as soon तो as ये possible. बाथरूम चला जाता है और फिर मैं वेट करता हूँ। यार शिखर तेरे को हर मैच के पहले ऐसे कैसे होता है यार। ये तो That would बॉल नहीं be- खेलता है, मैं खेलता हूँ, तो मुझे अंदर जल्दी जाना पसंद है कि अंदर जाके थोड़ा सेटल हो जाओ, देखूं फील्ड वील्ड देखूं, ये वो। ये पहला बॉल खेलेगा तो भाई तू जितने देर तेरे को पेशाब करना है कर तू। But anyway, this is something that we actually laugh about. It is funny because यार हर मैच में, एक मैच में ठीक है, हर मैच में उसको ऐसा होता है। ओए, मेरे से बड़ा भुलक्कड़ ये है। ये देखो अच्छा, पासपोर्ट भूल गया फ्लाइट के अंदर, वो आगे सीट में अभी आगे डाला। कितने, अभी लास्ट टूर जो हमने खेला ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी इंडिया में, उधर भी तूने कुछ तक क्या भूला था यार। अच्छा, ड्रेसिंग रूम में ये बड़ा होता है कि मैं सॉक्स मांगूंगा, सॉक्स भूल जाऊंगा। हाँ, हर मैच में इसको सॉक्स देना पड़ता है। कि उससे सॉक्स दे यार, चल यार। मैं ले लेता हूँ, मैं देता ही नहीं। देने ही यार, सबके बाद इतनी पड़ी होंगी, कोई नहीं। जायदाद ऐसे बनाई जाती है, That would drive me crazy. एक एक मोजा मांग के जायदाद बनाई जाती है, बंगले खड़े करती है बंदों ने ऐसे। इतने बड़ी जायदाद बना ली होगी इसने अभी तक। अच्छा, कभी भी आया मैं सपोर्टर थे, सपोर्टर। ये तो ना ओपनर्स के बीच में इंटीमेट रिलेशनशिप हो जाते हैं ना थोड़ी देर बाद। एक बारी क्या हुआ, चेन्नई जाना था, तब एनसीए चेन्नई में हुआ करता था ना, ऐसे 2-3 साल पहले, थोड़े टाइम के लिए। तो मैं पहुंच गया जी, अब 2-3 दिन के लिए ट्रेनिंग करनी थी। बताओ मैं क्या भूल गया, किड बैग। Wow. मेरे बंदे ने डाला ही नहीं। किड बैग पहुंचा, किट बैग पहुंचा, सूटकेस नहीं पहुंचा, कपड़े ही नहीं। फिर मैंने उनसे बोला कपड़े दो थोड़े यार। फिर मुझे बोल रहा है so then does it, like if you guys have a bad day and both of you had a bad day together, does he get over it quicker? ये इसका वो थोड़ा पंजाबी नेचर के, अरे कोई बात नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आ जा। नहीं, पहले मुझे नहीं लगता है कि शिखर इतना सोचता था। अभी क्योंकि ऑब्वियसली अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा है एंड सी नोइंग हिम सो मच, गेटिंग ओवर टफ टाइम्स, आई डोंट थिंक इट्स अ प्रॉब्लम फॉर हिम। Obviously he must be like thinking about it when he goes back to his room. और आई गेस की फेसेस हैं, मतलब बंदा वो जर्नी उसमें सब कुछ सीखता है
कई ऐसे भी टाइम आते हैं जब बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कई ऐसे भी मौके आते हैं कि भाई जब पता होता है कि भाई ड्रॉप हो रहे हैं तो बंदा बचाता है अपने आप को, उस चीज़ को बचाने के चक्कर में फ्रस्ट्रेशन आ जाती है या डर आ जाता है, फिर जब बंदा बाहर होता है फिर कहता है अच्छा बाहर हो गया यार क्या फर्क है और लस्सी बड़ी अब फिर अंदर जाएंगे फिर अंदर हो जाएंगे। फैमिली की ये बड़ी हमारे को सपोर्ट हो जाता है, तो जब वापसी आता है तो बंदा उस नेगेटिव उसमें नहीं रहता माइंडसेट में, वो फिर पॉजिटिव हो जाता है। बच्चा देखते जब बच्चा दौड़ के आ रहा है गले लग रहा है या कितनी बार ऐसा होता है कि हम चार कॉरिडोर में बैठे हैं, कॉरिडोर में 1 घंटा बिता दिया, दोनों बैठे होंगे, ये भाग रहा होगा उसके साथ खेल रहा होगा, अब मैं देख रहा हूँ मैं हंस रहा हूँ, तो इतनी बारी किया हमने ऐसा, तो वो उससे वो एनर्जी चेंज हो जाती है। पता नहीं अभी तो You learn to take it. लेवल बढ़ गए होंगे। You learn to सहनशीलता। सहनशीलता. Do you know the meaning of सहनशीलता? सहनशीलता मतलब सहन करना ऐसे ही कुछ होगा यार, और क्या नाम से थोड़ा लग रहा है। थोड़ा इसको टपोरी मुंबईया जो इंग्लिश हिंदी है उसमें थोड़ा सा अभी हमने काफी अभी जो स्पॉन्सर शूट्स होते हैं यार आईपीएल में, उसमें एकदम शुद्ध हिंदी बुलवाया हम लोगों को यार, काफी मतलब That's more difficult than facing six bouncers. या एब्सोल्युटली, मतलब शुद्ध हिंदी, मतलब यार जो भी बॉम्बे से है ना उनको दे कांट स्पीक प्योर हिंदी, ऑब्वियसली थोड़ा अरे कर रहे है ना, अरे ये हो रहा है ना। अभी तो मैं इनके साथ इतना टाइम स्पेंड करता हूँ ना इन लोगों के साथ, तो इसीलिए मेरे हिंदी में थोड़ा कमांड है, और हाँ जी सर, क्या जी सर, थोड़ा ये मतलब यार इनका वो नॉर्थ साइड में हम लोग थोड़ा ज्यादा, 2 साल भी कोई बड़ा होगा ना तो हाँ जी पाजी, ये हमारे लिए थोड़ा सा नया है यार, बॉम्बे वालों बॉम्बे का चलना हटना ये क्या होता वो है ना, वो जो मूवी का डायलॉग था यार सिंघम का, सटकली आता माझी सटकली, सिंघम क्या था, अज्जू क्या पता नहीं, वो बहुत पहले हमारा है ना, हम केरला में थे और बोट पे सारी टीम गई थी हमारी, तो वहाँ पे हम धर्मशराज खेल रहे थे, तो अज्जू को आया था, अजिंक्य राणे को आया था सिंघम तो ऐसे क्या हो ये क्या है भाई तो मुझे पता, मैंने मूवी नहीं देखा है वो, हाँ वो मेरी टीम में था तो हमको जज करना था, ऐसे कर रहा था लेकिन तो इतना हंसने आया था हमको यार, वो याद आ चुका जब उसे बॉलर को चिढ़ा रहा था, अजीब नहीं चिढ़ाई थी यार बॉलर को, वो बॉलर उसको स्लेज कर रहे थे, Surprise, surprise. प्ले द शॉट, ये है तो अज्जू ने जगह कंफ्यूज हो गया होगा ऑस्ट्रेलिया ने, मतलब वो बोल रहा है भाई कौन है Dude, sledging is just a part of the game. You gotta have fun, you know what I mean? Oh, absolutely. आज तक इससे अच्छा स्लेजिंग का रिप्लाई मैंने सुना नहीं कभी। ओ यार ये क्या बात कर रहा है तू, धवल कुलकर्णी ने भी ऐसे ही कुछ किया था, हम लोग कहीं पे प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो मैथ्यू वेड है ना उनका लेफ्टी बैट्समैन, वो बैटिंग कर रहा था, तो एज लग के उसका चौका जा रहा था पीछे पीछे, तो धवल उसको जाके उल्टा सीधा बोल रहा है, ये वो पता नहीं कौन से लैंग्वेज में बोल रहा था, तो मैथ्यू वेड ने बोला ये पार्डन, व्हाट यू सेइंग मेट, पार्डन पार्डन, तो ये इसने बोला व्हाट पार्डन, गो टू द गार्डन ये वो पागल हो गया वो मैथ्यू वेड, बस क्या नाइट ऑलराइट या लिट सारे बाय अच्छा सिटी साउथ साइड जहां जहां So tell me now, there's so many, you guys have now become the seniors of the team, right? So which junior do you see जो लगता है कि अरे ये रोहित का यंगर वर्जन है हैबिट्स में और टेम्परामेंट में, और which one do you think शिखर के स्कूल से? शिखर के स्कूल से तो यार ऋषभ पंत, हाँ एक्चुअली पंत बोलने की Yeah, he आदत does. है, बोलने की आदत है, थोड़ा मुंह फटे है और he doesn't worry about things, Yeah. तगड़ा है, हाइट कम है बस, तो बड़ा हो जाएगा तो हाइट बढ़ स्मार्ट भी जाएगी। कम है थोड़ा। और तेरे लिए तो पृथ्वी हो सकता है तेरे हिसाब से, क्योंकि पृथ्वी तेरे जैसी है, लेट बैक, पर अच्छी चीज ये है कि वो ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा यंगस्टर नहीं है हमारा कि वो भाई ऐसा किसी हमारी तरह बनना चाहता, वो अपने जो खुद है वो वैसे ही रहना चाहते हैं, वैसे ही होना चाहिए एक्चुअली, आप
किसी को मतलब किसी की तरह बन नहीं सकते, मुश्किल है. Yes, you can follow, but nobody can be like that particular individual because वो जो individual है वो अलग है भाई. मतलब सबको भगवान ने इसीलिए अलग अलग बनाया है. Don't be the second somebody, be the first yourself. है ना? अरे बोल देते हैं बड़ी-बड़ी बातें कभी-कभी ऐसी निकल जाती है. So now tell me, World Cup is obviously upon us. ये हमारे देश में जो इतना मतलब पहले तो टीम सिलेक्शन का मतलब सारे एक 100 करोड़ सिलेक्टर है ना? 130 करोड़ सिलेक्टर हैं, फिर 130 करोड़ एक्सपर्ट हैं. और है मतलब दिस तो हम जितना भी मजाक उड़ा लें उसका बात तो सही है. मतलब you have to treat it like any other cricket game. बिल्कुल. और क्या वो सोचने से प्रेशर ही बढ़ेगा, हैवीनेस बढ़ेगी, उसका क्या फायदा? कोई फायदा ही नहीं. तो इससे सोचने का फर्क ही नहीं पड़ता. और हमारे लिए जब हम उधर एक बार पहुंच जाएंगे, पहला मैच खेलेंगे ना, इट वोंट बी लाइक ओह ये वर्ल्ड कप का मैच है यार और ये करना है वो करना है. नहीं, इट्स जस्ट अनदर क्रिकेट गेम. बिकॉज क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी में ये काफी बात होती रहती है कि यू हैव टू ट्रीट दिस एज अनदर गेम. इवन आईपीएल भी हम जब खेलते हैं अच्छे टीम के साथ खेलते हैं या जो टीम फॉर्म में नहीं है उनके साथ खेलते हैं, तो हमारे लिए ऐसा नहीं होता है कि हमारे लिए मतलब किसी के लिए भी ऐसा नहीं होता है कि यार ये टीम अच्छा खेल रही है इसके साथ हमको अच्छा खेलना है. The mindset of beating an opposition doesn't change. So for that, you just have to keep maintaining or keep doing the things that you've been doing. हाँ, but बाहर से तो ये काफी सारी आवाजें आएगी. क्योंकि भाई उनकी चीज उससे बिकती है ना. उनकी चीज तो हाइप करने से बिकेगी. हम अगर अपने उसको हाइप को सीरियसली ले जाएंगे उस चीज को, या हमने वो प्रेशर बढ़ा दिया तो प्रेशर तो हमारे पे. वर्ल्ड कप है तो क्रिकेट का मैच ही, और क्या, और ट्रॉफी है उसका नाम वर्ल्ड कप है. सही बात है. So thinking मतलब ये अभी तो बहुत साल हैं इस बात को, पर कभी सोचते हो कि अरे यार चलो ये एक दिन खत्म भी होगा ये, you know, एज तो हो ही जाती है, सबके साथ होना है वो. तो have you guys started thinking that already? मतलब does that cross your mind? I go by the flow. The flow, yeah. आगे का ज्यादा उतना सोचा नहीं है कि 4 साल 5 साल 6 साल 1 साल के बाद क्या होगा. पर इवन वो थॉट भी एक्सपेक्टेशन वाली बात होती है, क्योंकि आपको नहीं पता कब तक चलनी है कब तक नहीं चलनी. क्या पता 2 दिन हो 2 साल हो या 4 साल हो, किसी को नहीं पता. तो उसमें एटलीस्ट ये नहीं है कि चुभेगी नहीं चीज, कि वही एक्सपेक्टेशन में आगे बैठे होंगे 4 साल और हो. Because when you think that, you forget to enjoy what is there in front of you. So I think that is something that I have learned. इतने सालों में सीखा है मैंने कि यार जो अभी का जो मोमेंट है उसको एंजॉय करो. जैसे ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस में हम बैठे हैं तो एंजॉय बेस्ट शो. वो ऐड आती ना, जब तक बल्ला चल रहा तब तक ठाट है, जब बल्ला बंद वीरू का तो फिर कमेंट्री शुरू. टैलेंट पूरे, टैलेंट तो ऑल राउंड है शिकी में. मैं तो देखना चाहता हूँ जट जी को कमेंट्री करते हुए यार. He'll be very good हिंदी. मेरा वो है हिंदी में यार, ये सेंस ऑफ ह्यूमर स्ट्रांग है. वो वैसे ही तो होगा. स्ट्रांग सही है यार. लेकिन गालियां बंद हो जाएंगी, सेंस ऑफ ह्यूमर स्ट्रांग होएगा. सेंस ऑफ ह्यूमर इंग्लिश में भी चाहिए ना, तो इंग्लिश में भी ले आएंगे थोड़ी मेहनत करके. ऐसी कौन सी चीज जो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तू इंग्लिश नहीं बोल सकता, बट आई कैन स्पीक वेरी वेल इंग्लिश. No अंग्रेजी. वेरी गुड इंग्लिश. Aisha sitting behind and shaking her head. She's like no. नहीं ठीक बोला ना, मेरी टीचर तो यही है. दोनों की टीचर बैठी है वहाँ पे. By the way, एक मैं रूमर क्लियर करना चाहता हूँ. Obviously, wherever you are, Ritika is always striking a deal. कोई मतलब $5 million, $10 million, सारी चीजें पीछे हो रही होती हैं. पर जब मैंने रितिका को बोला कि Rohit something, she said, "Oh, I'll check with Rohit." मैंने कहा, "Don't pretend like you're checking with him. Like you're the boss. You will tell him what to do." Yeah, right? That's what she does. नहीं, पर ये so Shikhar we have to ask. Ritika said this is a perception that Rohit has started. See, I'm defending you now. ये perception किया उसने कि I'm the boss. पर ये सबसे clever boss है जो कंट्रोल भी कर रहा है. मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं तो कंट्रोल कर ही नहीं रहा. ये भाई शिखर विल बी द बेस्ट पर्सन टू आंसर. भाई ये तो हर एक घर की सेम कहानी है, कोई अलग थोड़ी है. वो तो रजामंदी के साथ ही होता है कि भाई क्या है क्या नहीं. इवन अगर मेरे केस में भी है, मैंने आयशा को जैसे बात हुई यार रितिका आयशा से बात कर ही लेगी उसके बारे में कि भाई शो का है. तो जब वहाँ दोनों रेडी हैं तो हम रेडी हैं. हम कौन होते हैं बोलने वाले. वहाँ से बड़ी सरकारों से आ गया हुक्म तो फिर चलो. He told me this also. Shikhar said. मैंने बोला था नहीं, बोला था कि रितिका. He said, I am fine doing it. Just check with Aisha please.
For the show. For the show. Just check Good with points. I understand one thing though, he didn't even remember the show. And he was telling me, remember I told you about the show? And I said, no, you didn't. मैंने भी राज से बोला मैंने वो यार अच्छा वो शो भी है अभी तो कह रही मुझे तो नहीं पता मैंने रितिका ने नहीं बताया तो मैं कमाल है भाई So basically, it is decided that the two of you, while trying to be Dhurandhar and dudes and everything, you both are controlled by your wives. not too Yeah, also. exactly. शो इनका है, इसका मतलब ये थोड़ी है कुछ भी बोलेंगे देख लेंगे कहना कि भाई क्या शो करना है बीवी ने बोल दी नहीं आज जरा घर पे बैठो चलो घर पे पता चला है चैंपियन विद ब्रेकफास्ट विद ब्रेकफास्ट चल आ जा भी घर पप्पू घर में पहले रोटी बनाना है that was a good one Oh यार, पकड़ लिया. अब तो पकड़ लिया. अब तो जाना पड़ेगा. अब तो पकड़ लिया. That's a good note to finish it on. इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज ओह इसने सब्सक्राइब हो दिया तो मैं फिर लाइक बोल अच्छा, देता हूँ. नहीं, नहीं लाइक ठीक है कोई बात नहीं. You still say share. और इस वीडियो को शेयर कीजिए और तो लाइक करिए. सब्सक्राइब शिखर ने करवा दिया है. शेयर रोहित ने करवा दिया है. और घंटी बजाना आप ना हाँ घंटी बेल आइकॉन. थैंक यू. बेल आइकॉन to subscribe. That was pretty dope, bro. No, absolutely. I figured that would be a good duo to watch in an interview because, you know, Rohit, I'm not surprised at all by his personality. He seems like a very laid back, very easygoing guy, which I think really helps in his captaincy when he's asked to be a captain. And Dhawan, I don't know. I kind of pegged him a little differently. I thought he would be a little more intense. He would be a little more like bashful, if you will. Right. But he, you know, he was jovial when he needed to be. He was funny. I was really, really impressed. And I didn't think he was a grump or anything, but I just thought he was a little more like intense. Right. Well, I mean, and it's funny because these guys are now the veterans of the team, right? They've been there for a while. So you figure that they're going to be more serious and more, and they're as laid back as can be, man. And their approach to the game is, in my opinion, the best. Here's the thing. We expect perfection out of these athletes. We do, okay? And I am. People right now that are from CFA Nation are like, are you kidding me, Gabe? It's all about the, yes, I expect perfection from my athletes. But that's not realistic. I understand that. But you shoot for perfection every time. With that being said, failure is going to come, all right? Bottom line is failure is going to come, all right? Failure, and I tell my students all of this all the time, failure is a part of learning, all right? Failure is a part of succeeding. And what happens is if you don't take every game as it just being a game, you put this unwarranted amount of pressure on you that doesn't need to be there. Okay. You've been doing this. These guys have been playing for years. Okay. All the way from, 19 to even when they were in school. And it's the same thing. And like with Trey right now, I try, especially if they're going to be scouts in the stands or if he's playing, let's say, another D1 recruit or somebody who's, I prefer not to say anything because then he gets all worked up in his head about it. Man, it is what it is. It's another game. Go out there and just play, cousin. You know what I'm saying? Let the chips fall where they may. And that's why you do all the hitting in the nets, all the practicing, all the fielding, so that when you get out on the field, it's just robotic. You know what I mean? It's just doing it over and over again, and that pressure's not really on there. You're not thinking about that. With that being said, I think it was interesting, though, that, players are creatures of habits, okay? And we hear this all the time. You hear about these players that wear the same socks. Or back in the day, the same jock strap, to be like, they're crazy, to be like, but you don't want to change anything, especially when it's working. And here comes this young Rohit Sharma, 18, 19 years old, whatever, when he made the team. And MS Dhoni's like, hey, I need you to start for me. First of all, when Dhoni asks you to do something, cousin, it's not a request, all right? It's telling I'm going to do it. You know what I mean? He's asking you, but he's telling you you're you're opening. And then he goes to the other veteran on the team, like, okay, Shikar, well, do you want to open? Do you want to strike first? Obviously, he's like, nah, I never go first. So you throwing me but it is what it is. You throw it into the fire and you sink or swim. And obviously, Dhoni thought enough of his skills to put him in that opening partnership. And
his attitude was awesome. Look, if I get out, I get out. You know what I mean? But I'm gonna go out there and bat because it's just a mentality. And you and I have talked about this before. You know, where people on the channel be, oh, that guy's not an opener. Guys, openers is just a mentality. Realistically, it is. It's just how you approach the game. Now, does he have the skills? I realize you need certain skills, especially the difference between like test and limited format. You know what I mean? Like T20, you need different skills to open. But if you've got the skills, if you can open, just go up there and do it. Now, I've never done it before. Yeah, there's a ton of stuff I've never done before. All right. But there's a first time for everything. You go out and do it. You know what I mean? It's like ripping off a Band-Aid. And I thought that story was really, really cool, man. But what about you? What stuck out about the interview to you? I love the part. I noticed I heard your comments in the background. I love the part where they talked about their mentality of going into a match, whether it's a World Cup match or whether it's a regular match, because I think most of us assume that and I get these guys are probably different than other athletes. Most of us assume that if they lose or if they choke, it's because the pressure got to them. It's easy for us just to label that on them. But here's two athletes, two cricketers that are saying, like, for us, like, we don't put that expectation. We don't spend the entire weekend draining or grinding or whatever. You talk to a Tom Brady, it's a completely different situation. He's always in preparation mode. Right. But these guys, they've played cricket before. They know what their game is. And I loved how they said that you can't make the moment bigger than what it is. You go out there, you play your best, obviously. You do your training regimens, whatever you do, and you let the game play the way the game plays. That first match that they opened together, they said they had 100 partnership. The team got 330. It was all good and roses. What if they went down and got nothing, right? And then it'd be a really severe situation. The other thing that was really interesting to me that Dhawan said was, he said, especially I'm assuming when he's talking about you're a younger player, you have that fear of being dropped. Because he asked him the question, do you get frustrated after a loss? He's like, honestly, you get worried and you get scared. And yes, it's frustrating. And sometimes they roll off your back. Sometimes they don't. But it's really scary when you're afraid you're going to get dropped. And when you do get dropped, then you don't care anymore because you're already dropped. I thought that was hilarious and that was very insightful. But that's something that obviously I've thought about when following cricket the last few years, but never really focused on. That guys like a Prithvi Shaw or even a KL Rahul, guys who are established and are still back and forth, they have to worry about that every single time. Are they going to blame that loss on me? Am I going to be one that's sent down? And if it is, then fine. I've been there before. But that was really telling how someone as laid back as him, even he admitted, yeah, the fear of being dropped when you're a younger player or whatever is real. No, for sure. And I think that was interesting, the fact that they mentioned Prithvi Shaw. And, we specifically over on CFA Nation, we were so hard on Shaw. And to our point, go back and check. He got dropped. He was in a bad way. I mean, and then after being dropped, like you said, the worst thing has happened. After he was dropped, the guy scored centuries in domestic going off because it wasn't already happened. And you get that pressure off yourself. And it's funny that they mention him because I think he is one of the next great Indian batsmen. You know what I'm saying? If you watch his game, this kid can rake. With that being said, I think that one of the coolest things they mentioned, and he was like, look, you just got to have that support, and whatever, game goes bad, whatever, you get home, wife and kids are there, kids running around as playing. Like, you know what I mean? It's not the end of the world. You know what I'm saying? There's going to be another game tomorrow. There's going to be another Champions Trophy. There's going to be another WTC. There's going to be another IPL champion. I mean, you know what I mean? There's going to be another one. So, yes, do you want to win every single game you go out there when you set the foot on the field? Yes. But you cannot lose track of the sight that you're still in a position in the blessed position to be a professional athlete, to perform. And as long as you leave it out on the field and do the best you can, then, you know what I mean? It is what it is. And yes, there'll be fans like myself who hold you to unbelievable expectations and will kill you when you don't perform well. But ultimately, it is what it is. And we're still going to rock with you. You know what I mean? That's just the passion that fans have. I think as married dudes, though, the funniest thing about the interview, and we've done a couple of these with a Breakfast of Champions, is having the wives there, it was like such a different, dynamic. And like we've seen Virat Kohli, we've seen AB de Villiers, right? But any married dude knows realistically
happy wife, happy life, right? Yeah, she runs it. I could care less. You know what I'm saying? That's just the reality behind it. It's not even worth fighting some of those battles. You know what I'm saying? So he was like, "Oh, so you two are controlled by your license?" He said, "Us two, us three. You not? You know what I mean? Yeah. You do Who what do you think want to do. are? Stop it." So It I was thought that was hilarious funny. where he's like, Dhawan was like, my wife, she tells me, you're going to do the show. He's like, who am I not to agree with her? Okay, that's what I'm going to be doing. And I mean, the wives were like calm and collected, especially Dhawan's wife. I mean, she was right there. She wasn't messing around. She was calm and collected. That was hilarious. I thought that was cool. Super cool. Us both being big family guys, that their wives, his kid was right there on set in the background. And that Breakfast with Champions, they're so laid back. They're like, yeah, we'll show them from time to time. We'll see. This is like this is not a super like formal thing. We're just having a conversation. I think the host, we don't really mention him too much. He did a great job. He's so laid back. I don't know how he knows all these guys, or maybe that he's like meeting them for the first time and he's just super, super laid back. It seems like he knows these guys quite a lot. The last thing I want to mention is the NCA. They kept mentioning the NCA. That's where they met. Do you know what the NCA is? No. So I looked it up just a few seconds ago. It's the National Cricket Academy. And this is something that I think is pretty smart. It says that this academy was established in 2000 as a cricket facility for the BCCI to train young cricketers who are identified as having the potential to represent the Indian cricket team. So, they get chosen early on, they get identified, and they meet each other at this cricket academy. As a young cricketer who has aspirations for this or that, I think that's super cool. You go there, you see who's there, you see what's going on, and then 5 or 10 years later, you're playing alongside these guys on the national team. Anyways, I thought that was really cool. I didn't identify what is the NCA when they were talking about it, but these are so much fun. These are so great. Thanks so much for requesting that we check out Dhawan and Rohit, and we got to see them both at one time. Please don't forget to come back next week for another Cricket Tuesday. Don't forget to like and subscribe, and until next time. That's 6 runs.